In the last lecture, we discussed the officers of the Parliament, in which we discussed Speaker of the House, Deputy Speaker of the House, Chairman of Rajya Sabha, Deputy Chairman of the Rajya Sabha, their appointment, their resignation, and the kind of process which is adopted for their removal. Today, we are going to, discuss the proceedings of the Parliament. The Parliament can be summoned, prorogued, and dissolved by the President. Even the message to summon can be sent to the House by the President. The President can prorogue the House as well. The President will also address the House, especially the Lok Sabha, and after every general election, the President is going to address both houses of the Parliament, and every year that is called motion of thanks, which is also deemed to be no confidence motion, because if that is passed, it means if any amendment is made and the government is not able to protect it, then allowed to pass, then it means that the government is going to resign, because the Council of Ministers has lost the confidence of the House. Now, what is prorogation? What is adjournment? What is dissolution? Who can send the message? And where we have borrowed it from? So the President can summon the House if the Prime Minister says so. Then the Parliament can be adjourned by the Speaker, or in case of Rajya Sabha, it is the Chairman or the Deputy Chairman. Adjournment merely end the sitting of the House. In day-to-day sitting, we hear that the House has been adjourned till 2 o'clock. And prorogation puts an end to the session of the House. Now, how many sessions there are in the Parliament? The first is budget session, that is from February up to May. Then we have monsoon session, July up to September. And the last is the winter session, and that is called from November, December. There are 3 sessions. Now the session can be ended sine die. It means the definite date has not been mentioned for, but there should not be gap of more than 6 months between 2 sessions. And if there is so, the President can summon. So I have mentioned everything over here as well, that in order to conduct the proceedings of the Lok Sabha and Rajya Sabha, there must be quorum. The quorum is called the minimum number of the members present in order to start the proceeding, and that is 1/10 of the total membership of that house. That is called quorum. But suppose a business has been conducted and certain action has been taken, despite the fact that the quorum was lacking, that will not be challenged in any court of law, because this quorum, maintenance of quorum, is merely directory, that is not mandatory. But
it is the duty of the speaker or chairman in both houses to have the quorum, but that is directory. The businesses conducted during that time when the quorum is not maintained will not be challenged anywhere any in the court. Then we have language. The language of the house will be will remain Hindi or in English, subject to Article 348, Clause 1. That says that the proceedings of the Supreme Court and every High Court will be carried on in English till the Parliament passes a law to that effect. Okay. Now we have need to understand that who can participate in the parliamentary proceedings. Only the members of that house can participate in the parliamentary proceedings, except the minister who can participate in both houses. And we know it very well that the minister can participate even when he is not the member of either of the house, provided he has to take the membership of at least one house within 6 months. But he is authorized to speak, sit in both houses. Similarly, Attorney General is also empowered to visit the house, sit in the house without voting right. Then we know the dissolution of the house. So, first is summoning, prorogation will, adjournment will end the sitting of the house on that day, prorogation will end session of the house, dissolution will bring the end of the house. It means now there has to be fresh election. So what will be the impact of the dissolution or prorogation or adjournment on any bill which has been introduced in the parliament? If there is any bill pending before the house, the prorogation will not have any impact on that and it will not lapse at all. But after dissolution, suppose the bill is pending in the Rajya Sabha and it has not been passed by the Lok Sabha, then it will lapse. Or suppose that the house has been dissolved and the bill is pending in the Lok Sabha, and at that time itself the house is dissolved, then also the fresh bill will come. Now, one thing we need to understand that if anyone has committed any contempt of the house, even in the prorogation and dissolution of the house, it will not have any impact because the next session or next parliament will once again take that issue. Therefore, if anybody has committed contempt, so suppose that their house has been prorogued, but in next session, once again that person will be punished who has committed the contempt of the house. Or suppose the contempt is pending and then the house is dissolved. It doesn't matter. The next house will reassemble and once again the matter will be taken up. So these are certain things which we have discussed, but we have to understand that Lok Sabha is subject to dissolution. Rajya Sabha is a permanent house, not subject to dissolution, because the members of the Rajya Sabha are elected for 6 years and 1/3 of its members are retired every 2 years. Now we have to once again, I will explain in Hindi as well. संसद में समन करने का अधिकार, सत्रावसान करने का अधिकार और विघटन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जो है
6 महीने से अधिक गुजर जाता है तो वो मैसेज दे सकता है प्रेसिडेंट उसकी सहायता से। राष्ट्रपति जो है हर बार इलेक्शन के बाद और हर साल जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उस पर चर्चा होती है, उसके भाषण के बाद, एड्रेस के बाद, और उसको ये माना जाता है कि अगर वह पारित नहीं हुआ तो इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के रूप में माना जाएगा। इसलिए कि यह सरकार के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी अवहेलना होगी, बिकॉज राष्ट्रपति का जो वो भाषण होता है वो कैबिनेट ही तैयार करता है, क्योंकि पिछले साल की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सब कुछ उसमें गिनाई जाती हैं, और यदि उसमें कोई अमेंडमेंट अगर अपोजिशन लाता है और उस अपोजिशन को पास करवा लेता है तो ऐसा माना जाता है कि हाउस ने कॉन्फिडेंस खो दिया है। तो पहली चीज कि हाउस को बुलाने का अधिकार, उसे सत्र अवसान करने का अधिकार और उसका विघटन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। और डिसोल्यूशन यानी विघटन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का हो सकता है जो 5 साल का होता है, उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकता है अगर किसी जो गवर्नमेंट है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि हाउस का कॉन्फिडेंस खो दे। लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, इसके मेंबर जो है 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते रहते हैं। उसके बाद से हमको समझना है कि अगर कोई बिल लंबित है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर सत्रावसान हो जाए या उसका विघटन हो जाए तो हाउस का। सपोज कीजिए कि कोई बिल पास हो गया है लोकसभा से और वह जो है लंबित है राज्यसभा में, या समझ लीजिए कोई बिल पास हो गया है राज्यसभा से और लोकसभा में लंबित है। ऐसे समय में अगर हाउस डिसॉल्व, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, वह बिल जो है वो लैप्स कर जाएगा। लेकिन सपोज करो कि लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा में लंबित है और उसके पहले ही यह मंशा दर्जी दिखा दिया गया है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और तब जो है हाउस डिसॉल्व होता है, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा, मरेगा नहीं, उस बिल को पुनः ले लिया जाएगा। और सपोज करो कि हाउस, दोनों हाउस ने पास कर दिया है बिल को और यह पेंडिंग है सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति के लिए प्रेसिडेंट के, तो ऐसे में भी वो बिल लैप्स नहीं होगा। बाकी प्रोरोगेशन का यानी सत्रावसान का बिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर किसी हाउस में किसी ने किया है तो चाहे वो सत्रावसान हो और चाहे विघटन हो, दोनों के सेशन खत्म होगा, नेक्स्ट सेशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ले लिया जाएगा। और विघटन भी होगा तो नए जो जनरल इलेक्शन के बाद जो बैठेगा, जो पार्लियामेंट बैठेगा, वो फिर से उस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को ले लेगा। तो कैबिनेट तैयार करता है जो है भाषण, अभिभाषण जो है तैयार कर राष्ट्रपति का कैबिनेट तैयार करता है, क्योंकि उसको ही पता होता है कि क्या क्या उपलब्धियां उसकी पिछले साल की रही हैं, वो उसमें वो सब आती हैं। और जो यह हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, भाषण जो है प्रेसिडेंट मैसेज जो दे सकता है, ये हमने यूनाइटेड स्टेट से लिया है, इसलिए कि यूनाइटेड स्टेट में भी प्रेसिडेंट जो है ये मैसेज दे सकता है कांग्रेस को। उसी तरह से आप देखिए कि हर साल जब जनरल इलेक्शन होगा उसके बाद से जो पहला सत्र होगा वो जो है प्रेसिडेंट वो भाषण दे, अभिभाषण होता है, और उस हर साल का जो पहला सत्र होता है उसमें भी दोनों हाउस को साथ में प्रेसिडेंट संबोधित करता है। यह चीज हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है जहां पर मोनार्क यही कार्य करता है। तो आज हमने सिर्फ ये देखा कि प्रोसीडिंग क्या होती है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है और विघटन क्या होता है। जैसे स्थगन प्रस्ताव, स्थगन वही है कि सिर्फ उस सिटिंग को खत्म कर देगा और फिर एक निश्चित वो साइन डाई भी हो सकता है, यानी निश्चित डेट ना भी मिले और हो भी सकता है। सत्रावसान सत्र को खत्म करता है और अल्टीमेटली हमने जो देखा विघटन है वो फ्रेश इलेक्शन होता है। तो हमने ये सब चीज यहाँ पर देखा, प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर यहाँ पर लगी हुई हैं। हाँ, कोरम एक और हिंदी में बता दें, कोरम ये कह देता है कि किसी भी पार्लियामेंट के हाउस को चलाने के लिए एक मिनिमम सदस्यों की आवश्यकता होती है जो उस समय प्रेजेंट हो, और वो होती है टोटल मेंबरशिप का 1/10 दोनों हाउसेज में। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कम होने की वजह से कोई कार्य पारित हो गया तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि यह मैंडेटरी जो है क्लॉज नहीं है, यह एक सिर्फ डायरेक्टरी चीज है कि स्पीकर और या चेयरमैन को यह निश्चित करना होता है कि
जो कोरम है कि नहीं। अगर कोरम नहीं होता है तो एडजर्नमेंट होता है, वेट करते हैं। जब फिर कोरम हो जाते हैं तो बिजनेस हाउस का चालू हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही, और आगे इसके जो हम आएंगे तो उसमें फिर हम इसके आगे लेकर के चलेंगे कि कैसे प्रोसीडिंग बिल कैसे पास होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या स्टेजेज हैं जिस तरह से बिल जाता है। तो तब तक के लिए आज इतना ही, और धन्यवाद आपका देखने के लिए।